Hello everyone. Today we are going to study the chapter Our Environment, and it is for class 7, and it is the first chapter of geography part. Okay, so first of all you need to know the definition of environment. What does it really mean? Okay, in simple terms, environment comprises of two words, that is environ and ment. Okay, so environment, it means surrounding, and ment, it means action. So it basically refers the interaction between man and the nature. So it is the interaction between us and with the surrounding. Okay, or all living organisms with the surrounding. So the basic definition is that environment refers to the surrounding. Environment refers to the surrounding in which living and non-living things live, interact, grow, and perish. So this is the basic definition. Okay, you remember this. Okay, next you need to know the one important. We celebrate World Environment Day, so it is celebrated on 5th June. Okay, it is a GK question since we are studying the chapter environment. So World Environment Day is celebrated on 5th June. Okay, so mainly there are two components of environment. One is biotic component and one is abiotic component. Biotic component includes all the living things. Okay, all the like plants, animal, anything. This which include the biotic component. And abiotic component, all the non-living things, such as rock, air, soil. These are the non-living things. Okay, now the environment provides us everything. The environment provides us all the necessary things to nourish life in its various form. Okay, provides everything like air, water, land, food, shelter, and so on. Okay, so environment gives us everything. Now next, there are four spheres of environment. You already studied it. There are four. I think in the last class you have studied it. Okay, there are four spheres of environment. So I am going to just give the overview of it. Okay, so in there is first comes lithosphere. Okay, lithosphere, it also comprises of two words. That is the lithos, which means rocks, and spheres is a region or realm. So it is a region where rocks or rocks-like structures are available. Okay, so this is the lithosphere, rock or rock-like, the region where rock or rock-like structures are available. So it is also the outermost layer of the earth crust. I think you know what is earth crust. Okay, core, mantle, crust. So this is the outermost layer. Okay, the outermost layer of the earth crust is called lithosphere. Next, this is a general type knowledge. Okay, so the earth, you already know tectonic plate. Okay, the tectonic plates are found in the lithosphere, and there are 10 major. You need to remember there are 10 major tectonic plates. Okay, comprising the continents and Pacific Ocean. Just remember it. General knowledge question. So there are 10 major tectonic plates. Okay, next comes the hydrosphere. What is hydrosphere? It also comprises of two words, hydro and sphere. Hydro means water. So it is a zone where water is found. The water can be found in various forms, like ocean water, river, sea, lakes, etc. So these are some general aspects of water. Okay, so 70% of the earth's surface is covered by water, you already know, and out of this 70%, 97.5% of the water is in the ocean as salt water, and this 97%, 5.7, it can't be used by us directly. ये जो पानी होता है ना, salt water, ये हम लोग use नहीं कर सकते. Okay, after that only 2.5%, okay, only 2.5% of the water on the earth surface is fresh water, which is available to us. Okay, fresh water होता है, fresh water को ही हम लोग use कर सकते हैं. And out of this 2.5%, 38% क्या होता है, ground water, जो underground होता है, ground water होता है. Okay, next, out of this 2.5 का 68.9% क्या होता है, frozen in the form of glaciers. Glaciers में जो water होता है frozen होता है, ice cap होता है. तो this only 0.03% is available to us.
जो रिवर होता है, जो रिजर्वर होता है, जो लेक होता है, उसमें रहता है ओनली दिस 0.3%. सो हम लोग बोलते हैं ना वाटर कंजर्वेशन ओनली 0.3%, विच इज ऑल्सो 2.5% का 0.3% विच इज अवेलेबल. सो अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर. Next come atmosphere. Atmosphere is also two terms, atoms and gases. So atoms means gases. So we can define atmosphere as a gaseous layer enveloping the earth. You already know what is atmosphere. So you already know this composition of atmosphere. 78% nitrogen होता है, 21% oxygen, 0.9% argon, 0.03% carbon dioxide and traces of other gases. Okay, जो noble gases होता है या कुछ gases होता है. Okay, you already studied this. नेक्स्ट स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर को हम लोग डिवाइड करते हैं ना एज वी गो अप फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. ओके, सो पहले आता है कि ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर. एंड यू ऑल्सो नो दैट एक लेयर होता है ना ओजोन लेयर which prevents the ultraviolet rays from getting into the earth surface. So ozone layer is कौन से लेयर में होता है? It is in the stratosphere. Okay. Next come biosphere. Bio means life, sphere means region. So it refers to all the region on the earth where life exists. Simple. Okay. Next comes the topic ecosystem. What is ecosystem? You have to remember the term ecosystem was coined by Tansley, as a Tansley in 1935. General knowledge question, remember it. Okay. It was coined by Tansley in 1935. Okay. अभी इकोसिस्टम होता क्या है? ओके, बेसिकली इकोसिस्टम इज ए पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज दोनों चीज होता है और दोनों क्या करता है? अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं. दे डिपेंड्स ऑन ईच अदर एंड दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच इज सेल्फ सस्टेनिंग, जो सेल्फ सस्टेन कर सकता है. जैसे ओके, इन सिंपल वर्ड एक डेफिनेशन गिवन इन योर बुक, जस्ट आई हैव written from your book, just remember it. An ecosystem is a living community of plants and animals sharing an environment with non-living elements such as climate and soil. और बहुत सारा चीज होता है नॉन लिविंग में. ठीक है, सो दे शेयर इंटरेक्ट करता है. ठीक है, सो दैट दे कैन सर्वाइव. ओके, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ पॉन इकोसिस्टम. ओके, सो पॉन इकोसिस्टम में क्या होता है? कंपोनेंट क्या क्या होता है? एनवायरमेंट कंपोनेंट क्या होगा? एक होगा लिविंग कंपोनेंट, एक होगा नॉन लिविंग कंपोनेंट. नॉन लिविंग कंपोनेंट में क्या क्या होगा? पॉन्ड में वाटर होगा, टेम्परेचर, सैलिनिटी ऑफ द वाटर, ऑक्सीजन होगा, इनऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर. दिस आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट व्हिच आर अवेलेबल इन पॉन्ड इकोसिस्टम. ओके, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में लिविंग कंपोनेंट क्या क्या होगा? लिविंग कंपोनेंट होगा, यू हैव सीन ब्लू ग्रीन एल्गीज होता है, कुछ कुछ प्लेन होता है जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं. सो दिस विल प्रोड्यूस फूड. दिस आर द प्रोड्यूसर्स. Okay, with the help of these things, water, oxygen, sunlight, they will produce food, and this food will be eaten by the consumers. Consumers में क्या होता है? कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर भी होता है. ठीक है, जो प्लांट्स होता है जो फूड प्रोड्यूस करेगा विच विल बी इटन बाय इंसेक्ट और स्मॉल फिशेस विच आर हार्बिवोरस. Okay, and this will be categorized as primary consumers. Okay, प्राइमरी कंज्यूमर्स मेनली हार्बिवोरस होता है. ठीक है, नेक्स्ट कम सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होगा? जो इस प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएगा. ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे बिग फिश होगा, इट विल फीड ऑन दिस इंसेक्ट, स्मॉल फिश. सो एक चीज देखो, जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के जैसे फूड जा रहा है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, दिस एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज कॉल्ड फूड चेन. You have to remember this. This is called food chain. Okay, read the book. It is given there. Okay. Okay. Then comes the decomposer. Decomposer में क्या होता है? Bacteria and fungus. Okay. So when this fish will die, the decomposer will decompose it. Bacteria, fungus. Okay. Okay, so this is about ecosystem. Next comes the topic human or man-made environment. So till we have whatever we have discussed, those were the natural.
ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ह्यूमन और मैन मेड एनवायरनमेंट। जो हम लोग बनाता है, हम लोग जो भी चीज़ बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन और मैन मेड एनवायरनमेंट। जैसे तुम लोग अगर रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, घर हो गया, बड़ा बड़ा मकान हो गया, वो आर व्हाट, मैन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, मैन मेड एनवायरनमेंट क्या क्या आता है, एक होता है अर्बन और एक होता है रूरल। आई थिंक यू नो व्हाट इज रूरल एंड व्हाट इज अर्बन। सो दिस इज सिंपल द definition. Okay, read in the book, this given everything. Next comes the pollution, environmental pollution. Environmental pollution क्या होता है, any undesirable changes in the physical, chemical and biological characteristic of air, water, soil which affect the human life. अगर बाहर का जितना भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे अगर कुछ ड्रास्टिक चेंज हो गया, इट विल अफेक्ट अस। सो किस लिए कुछ चेंज हुआ, इसलिए तो हम लोग को इफेक्ट किया। और वो अगर चेंजेस अनडिजायरेबल है, विच अफेक्ट्स अवर हेल्थ और एनीथिंग अवर लाइफ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल्यूशन। ठीक है, ओके। सो हियर you need to know only basically there are 5 types of pollution: air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution and light pollution. So basically all these things are given here. Okay, so with this I conclude my lesson. Read the book properly and try to solve the questions answers. Okay, thank you. If any doubt, ask.